Okay, last time we discussed about labor market equilibrium. Okay, and we saw that marginal product of labor curve is basically the labor demand curve, and then we have labor supply curve, which is vertical. Okay, and then we have equilibrium real wage. Okay, so same same technique we will follow for the capital market equilibrium. Okay, so to determine the real rental rate or equilibrium rental rate. So in case of labor market, we saw that a firm will hire labor up to the point where marginal product of labor equals real wage. Okay, so this means in case of capital market, a firm will hire capital up to the point where marginal product of capital equals real rental rate. Okay, so this will be the case. So same logic we will follow. That marginal product of capital would be equals to real rental rate. So a firm will hire capital up to the point where its marginal productivity equals its rental rate, where this marginal product of capital is the benefit from hiring that capital, and this real rental rate is the cost of hiring that capital. So when benefit and cost are equals, so this would be the point up to which such factor would be hired. Now, the diminishing returns law says that as we hire more and more capital, then the marginal product of capital will decrease. And the marginal product of capital curve is also the demand curve for renting capital. Just like the marginal product of labor curve is the demand for labor curve, so therefore the marginal product of capital curve is the demand curve for renting capital. So firm will maximize profit by choosing capital so that marginal product of capital equals the real rental rate. This is the nominal rental rate and this is the price. So if we divide nominal rental rate with price, we will get real rental rate. Now, this is the equilibrium in the capital market. So we have use of capital. Here we have units of output. And the supply of capital is fixed, which is vertical. And demand for capital is the Maya product of capital curve. And at this point, we have equilibrium. Okay, so this is the equilibrium real rental rate. Okay. मैं स्टॉप कर रहा हूँ, अजान के बाद मैं कंटिन्यू रखूँगा.
Okay. So the capital market would determine the equilibrium rental rate. Okay. Now, if equilibrium rental rate is here, okay, if the rental rate is here, suppose at this point, suppose it is here. Now, in this case, uh, this is R. Okay. If this is the rental rate, now in this case, this is the demand for capital and this is the supply of capital. So this means there is excess supply of capital in the capital market. And whenever there is excess supply of anything, we know that the price will go down. So price of capital will go down. Okay. And when it decreases, it will bring equilibrium again in the capital market here. Okay. Again, there will be equilibrium where demand for capital equals supply of capital. Now, if we have here, if we are here, again, this is the demand for capital, this is the supply of capital. So in this case now there is excess demand for capital. So whenever there is excess demand for capital, this will put a pressure on rental rate to move up and again bring equilibrium here in the rental market, in the capital market. Okay. So this means the adjustment factor is the rental rate. So rental rate will adjust to equate demand for capital with the supply of capital to bring equilibrium in the capital market. Okay, so then the question is how the income would be distributed. So the Neoclassical theory of distribution says that each factor input is paid to its marginal product. So it means the distribution of income depends on the marginal productivity of factor. If the marginal product of a factor is high, then that factor will get higher share of income compared to other factor. Okay, and this is accepted by most economists. So here we can see how income is distributed. So this is the total labor income, and this is the real wage, and real wage equals marginal product of labor, and this is the total supply of labor. So it means this is marginal product of labor multiplied by supply of labor would be the total labor income, or if we multiply the real wage with the labor supply, but because real wage equals marginal product of labor, so that's why so both are same. Then we have total capital income. Again, the real rental rate multiplied by the capital stock. Okay, this would be the total capital income. Now again, this real rental rate equals marginal product of capital. So we will place marginal product of capital here. This is marginal product of capital multiplied by capital stock. So this shows that if the marginal product of labor is high, then more income will go to labor. And if the marginal product of capital is high, then more income will go to capital. That's why we see that if a labor is more productive and its marginal productivity is high, that labor get higher income and higher, wages compared to the labor whose productivity is low. And to increase our productivity, we get education, we get training, we get experience. So education, experience, and training
that increases the productivity of labor, and then they get higher share of income even within labor. And same is with the capital. So if we do more research, then we can increase the productivity of capital. So this is the distribution of income. This is total output. So this means total output is distributed to labor and capital. So this is the total labor income. Okay. This is your national income, this is labor income, and this is capital income. So I think you got the point how income is distributed. So it depends on the productivity of factors. So if labor are more productive compared to capital, so it means greater share of income, this national income will go to labor. And if capital are more productive than labor, then greater share of income will go to capital. Then we have a production function. This is the Cobb-Douglas production function. Okay. So this is Cobb-Douglas production function, which has constant factor shares. And now if we say that suppose this alpha is the capital share of total income, so then what would be the share of labor? Because total share would be distributed between capital and labor. So it means 1 minus alpha would be the share of labor. If alpha is the share of capital, so then 1 minus alpha would be the share of labor. So this is the income. So this is the share of capital to total income. So if we multiply this, we will get the capital income. And if alpha share goes to capital, then it means 1 minus alpha share will go to labor. So this income multiplied by 1 minus alpha. This is the labor income. So this is the Cobb-Douglas production function where this A represents the level of technology. This is the capital share is alpha, and then labor share is 1 minus alpha. Now because each factor's marginal product is proportional to its average product, okay, in the Cobb-Douglas production function. So this is if I want to know the marginal product of capital from this function, okay, this is the function, and if I want to know the marginal product of capital, so it means I have to differentiate this with respect to capital. So I have to take derivative of this. I hope you remember, maybe you studied the derivative. Okay, so this function derivative, you will take delta y over delta k. Okay, you will take the derivative. So in case of derivative, what we do, we take this alpha here, okay, and then from this capital we have to minus 1, okay, and this is same, there is no change here. Okay, whenever you want to take derivative, here we are taking derivative with respect to capital because derivative shows the rate of change. So we want to know the rate of change of y with respect to capital. So basically delta y over delta k is the marginal product of labor. Okay.
because marginal product of labor is the slope of this total product. Last time we discussed in our last class. So to get the marginal product of labor from this production function, we will take the derivative. And in case of derivative, this power will come down, and then from power we have to subtract 1. If you have studied derivative in your intermediate class. Okay, so सर that's आपकी why आवाज सही तरह से मेरी आवाज नहीं आ रही? सही तरह से नहीं आ रही आपकी सर। आपने डेरिवेटिव स्टडी किया है? टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग से इंटर किया है उनको पता होगा। डेरिवेटिव का तो पता है, पर आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ मेरी आवाज नहीं आ रही? डिस्टर्बेंस आप अपने एंड पे चेक करें। डिस्टर्बेंस मेरे पास तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आवाज आ रही है पर डिस्टर्बेंस आ रही है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो देन हेयर हमने यहाँ पे अल्फा डाउन किया एंड देन के, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू के हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो -1 हो गया और ये यही है। तो देन वी विल से सपोज दिस के। तो ये जो के है यहाँ पे बेसिकली के अल्फा एंड देन के रेज टू पावर -1 हमने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। और फिर के रेज टू पावर -1 विल कम डाउन and then we have this alpha and this a k alpha or l1 minus alpha. Okay, this is same. That's why we have this, and this is the average product. Okay, output divided by capital. So this is the average product of capital. So we can say that the marginal product of capital is proportional to the average product of capital. Okay, this is the average product. Same is with marginal product of labor. We have to take derivative with respect to labor. So 1 minus alpha will come down, okay, and then a k alpha is there, and then -1. If you take -1 plus 1 will cancel out. Then we have l raised to power -1. So this l will come down, and then this is the average product of labor. Okay, so this means the marginal product of labor is proportional to average product of labor, and this is the ratio. Marginal product of capital is proportional to average product of capital. So we discuss about the factor market, okay, and we discuss how equilibrium is achieved in the factor markets and how the prices of factors are determined, the price of capital and price of labor, equilibrium rental rate and equilibrium wage rate. We discuss how it is determined through interaction of supply and demand. And then we have already discussed determination of output, how output is determined. And the next, now we'll discuss about the demand side of the economy. Okay, we discuss about the supply side of economy. Output is determined with the factors. Okay, we discuss output is determined by factors, capital factor and labor factor. And next, we will discuss the demand side of the economy when output is produced. So then we have demand for the output, and in the demand side we have the consumption, investment and government expenditure. So, and these are the components of aggregate demand: consumption, investment and government expenditure. Okay, so consumption, expenditure. So this is the consumer demand for goods and services. Okay. Then we have investment, and which is the demand for investment goods. And then we have government expenditure, government demand for goods and services. So these are the components of aggregate demand in 3-sector economy.
And if we have 4-sector economy, then we will also add export and import. Okay, so net export would be added, export minus import. This is a closed economy. That's why there is no net export. If it is open economy, then we will also add net export. Okay, this one, which is export minus import. So then consumption, we make expenditure. Do you remember? On what types of good we make expenditure? Anyone knows? Yes. We make expenditure on durable goods, non-durable goods, and services. And consumption is a function of disposable income. This is the disposable income. Because the income that you get, if there is a government sector, then you have to pay taxes. From income, if you minus total taxes, then you have disposable income. And this disposable income is available for consumption and saving. So if I say this is YD, so this is YD, which is income minus taxes. So this disposable income is available for this. So this disposable income is available for consumption and saving. Because this income is not available for consumption. Out of tax, whatever is left over is your uh, disposable income, which is available for consumption and saving. Okay. And consumption is a function of disposable income. Okay. So what do you think? When disposable income increases, what will happen to consumption expenditure? It will increase or decrease? It will increase, sir. Yes, it will increase because as we get more and more disposable income, our consumption expenditure will increase. Okay, so as this disposable income increases, your consumption expenditure will also increase. If the disposable income decreases, consumption expenditure will also decrease. So there is positive relationship between consumption and disposable income. So this means if this decreases, this will also decrease. And then we have marginal propensity to consume. So this shows the increase in consumption caused by 1 unit increase in disposable income. So when our income increases, so we consume a part of increased income and the rest we will save. Okay, so and it depends what is the marginal propensity to consume. Okay, if the marginal propensity to consume is 0.9, this means if your income increases by $1, then your consumption will increase by $0.9. Okay, or if your income increases by $100, your consumption will increase by $90. So $10 you will save. It depends. If the marginal propensity to consume is 0.8, so this means 80% of increased income you will consume and 20% of increased income you will save. Okay, so marginal propensity to consume is basically change in consumption due to a unit change in disposable income. Okay, and this is also
the slope of consumption function, delta y or delta c over delta y. Okay. Here we have disposable income, here we have consumption. Okay, this is consumption function. Okay, which shows a positive relationship between consumption and disposable income. And you can see that if the disposable income is 0, here we have 0. So even if your disposable income is 0, still there is a consumption. Okay, and this is autonomous consumption. This consumption is for your survival. Then the question is, from where you will meet this consumption? How to meet this consumption? आपकी इनकम अगर 0 होती है तब भी आप कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करते हैं ना, फॉर योर सर्वाइवल। तो वो कहाँ से आएगी, वो पैसे कहाँ से आएंगे? यस सेविंग होगी सर कोई ना कोई। जी, सेविंग ना, इट मीन यू विल डिस सेव ना। हाँ, आपकी Yes, अगर सेविंग है तो उसको आप डिस सेव करेंगे ना, उसी को यूज़ करेंगे। या तो अगर सेविंग नहीं है तो फिर आप बोरोविंग करेंगे। ओके, यू कैन बोरो टू make consumption for your survival. And then you can see that as this is increasing, as disposable income is increasing, अगर disposable income आपका ये है तो फिर consumption जो है आपको इतना है, और अगर disposable income बढ़ गया, ठीक है, तो then consumption expenditure also increases. Now this is the slope. Okay, this marginal propensity to consume. This is the slope of consumption function. Okay? ये डेल्टा सी और डेल्टा वाई माइनस टी, ठीक, या डेल्टा वाई डी. So change in consumption divided by change in disposable income is the marginal propensity to consume, which is the slope of consumption function. Then we have investment, second component of aggregate demand. And investment is a function of interest rate, okay, which is the real interest rate. And real interest rate is the nominal interest rate minus inflation rate. So this is the nominal interest rate which is corrected for inflation. Okay, and the real interest rate is basically the cost of borrowing, and this is also the opportunity cost of using one's own fund to finance investment spending. Now, opportunity cost, no? Do you know what is opportunity cost? Yes sir. What is opportunity cost? सर किसी चीज को करने के अगेंस्ट आप कोई कॉस्ट बेयर कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। So For example, अगर आप Next best alternative foregone. best alternative foregone, no? Best alternative foregone. There is also opportunity cost of attending this class. Again, Yes, you sir. are attending this class. Now, what would be the opportunity cost of attending this class? You have to first list out what are the alternative. अगर इस क्लास को आप नहीं ले रहे होते तो इस वक्त अल्टरनेटिव आपके पास क्या थे, बताएं मुझे। और क्या कर रहे होते अगर क्लास नहीं ले रहे थे? सर, टीवी देख रहे होते, शायद जॉब में ओवर टाइम कर ले कोई बंदा, जॉब ओवर पे टाइम ओवर कर टाइम लेते कर, जॉब। जॉब Yes, पे sir. ओवर टाइम कर लेते, या और क्या करते, टीवी देखते, दोस्तों के साथ घूमने जाते, दोस्तों के साथ घूमने जाते, किसी डिनर पे चले जाते हैं, और तो ये देखिए ना, यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव। तो उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव यू गिव अप to attend this class would be the opportunity cost of attending this class. इसी तरह जो है, जो real interest rate is the cost of borrowing, you know, whenever you want to make investment. तो अब आपको अगर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो
दो हैं ना तरीके, या तो आप 1 लाख बैंक से बोरो करें, या अगर आपके अपने पास 1 लाख रुपए हैं आप उनको यूज़ करें। तो अगर आप बैंक से बोरो करेंगे तो देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो सपोज 10% है और उसमें से और इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2% है, तो 8% आपका रियल कॉस्ट ऑफ बोरोविंग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना अमाउंट यूज़ कर रहे हैं तो ये तो नहीं होगा ना कि आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, अभी भी कॉस्ट है, क्योंकि और वो कॉस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बिकॉज फिर हम ये देखेंगे कि आप अपना ये 1 लाख रुपीस अगर किसी और जगह पे रखें, किसी बैंक में रखें या किसी और जगह इन्वेस्ट करें, तो आपको रिटर्न कितना आएगा। अगर आपने ये देख लिया कि आपको 12% का जो है वो रिटर्न मिल सकता है, तो दैट 12% इज़ दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग योर ओन फंड। तो अपना फंड भी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, बल्कि यू गिव अप द इंटरेस्ट दैट यू कैन अर्न on the investment of your own fund in some other place. So the highest return that you gave up would be the opportunity cost of using your own fund. So what do you think, अगर real interest rate बढ़ जाएगा तो investment पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? What will happen? जी कम हो जाएगा Yes, सर, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा सर ना, लेस हो जाए। okay, because when the interest rate increases, so then it mean it's more costly to borrow ना। और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं then you compare the rate of return on that investment with the cost of borrowing, which is the rate of interest. तो अगर rate of return on that investment is more than rate of interest, तो तब तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो फीजिबल है ना। लेकिन और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो क्या आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे? यही करेंगे सर। नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसमें तो फिर लॉस है ना। आपको अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट करने में आपको 10% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन मार्केट में जो बोरोइंग अगर आप करेंगे उस पर आपको 12% देना है इंटरेस्ट रेट, तो फिर तो वो वाला प्रोजेक्ट जो है वो फीजिबल नहीं है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ना, ऐसे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो वो प्रोजेक्ट जिनके रेट ऑफ रिटर्न कम होते हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट पे फीजिबल नहीं होते। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो लोअर जो है वो रिटर्न वाले प्रोजेक्ट भी फीजिबल हो जाते हैं, क्योंकि फिर उनका रिटर्न जो है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से अगर ज़्यादा है तो दैट प्रोजेक्ट वुड आल्सो बिकम फीजिबल और देन यू विल मेक इन्वेस्टमेंट। सो दिस मीन्स व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस investment expenditure will increase, and when interest rate increases investment expenditure will decrease. So there is a negative relationship between interest rate, real interest rate, and investment expenditure. Okay, so this is so real interest rate increases, investment decreases, और अगर ये कम हो जाए it decreases, so this will increase. तो अगर प्लॉट करेंगे अगर हम इसको तो कैसे ग्राफ आएगा? नेगेटिवली स्लोप होगा या पॉजिटिवली स्लोप? अगर मैंने इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट इज हियर, रियल इंटरेस्ट रेट इज हियर। कंजम्पशन का ग्राफ तो पॉजिटिवली स्लोप था, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोप होगा, नेगेटिवली स्लोप? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव नेगेटिव, सर। ठीक है ना, नेगेटिवली स्लोप।
because there is a negative relationship between interest rate and investment. Okay, so Yes. spending बिल्कुल. on investment goods depends negatively on the real interest rate. गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ऑन गुड्स एंड सर्विसेज को हम उसको exogenous लेते हैं, ठीक है. That is, we are not making government investment as a function of anything, just like we made consumption expenditure as a function of disposable income, and investment expenditure is a function of real interest rate. But government spending is exogenous, okay, and this exclude transfer payment, social security benefit, unemployment insurance. गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हम इसलिए एक्सोजेनस लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कोई स्पेंडिंग करनी है तो पहले वो डिसाइड कर लेता है ये इन्वेस्टमेंट करनी है. गवर्नमेंट ने अगर एक ब्रिज बनाना है तो फिर वो डिसाइड कर लेते हैं हाँ ठीक है इस ब्रिज को बनाना है, इस पे जो है ना 5 बिलियन का एक्सपेंडिचर है. तो देन गवर्नमेंट विल सी फ्रॉम वेयर टू गेट दिस फंड, तो क्या टैक्सेस लगाए जाएं और किस तरह की फीस चार्ज की जाए कि वो उसको फाइनेंस कर सके. So we are assuming that government spending is exogenous, okay, ये exogenous है, and then taxes are also exogenous. Taxes could be made function of income, जो कि tax rate पे depend करता है ना. तो this is exogenous tax, but किसी और model में we can make taxes as a function of income, but here tax is exogenous. Then we have to discuss about the market for goods and services. So this is the aggregate demand. This is the consumption. तो हमारे को देखें consumption is a ये consumption expenditure है, investment expenditure है, ये government expenditure है, and consumption is a function of disposable income. Investment is a function of real interest rate, and then government expenditure is. So this is the aggregate demand. Aggregate supply. This is aggregate supply of output, which is a function of capital and labor. हमने अभी पहले डिस्कस किया ना कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन कैपिटल एंड लेबर, और फैक्टर मार्केट्स भी हमने डिस्कस किया. इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई. ओके, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई and this is aggregate demand. ये सारा जो है वो एग्रीगेट डिमांड. So we have goods market equilibrium. और इसमें जो एडजस्टमेंट फैक्टर है that is real interest rate. जो real interest rate है, whenever there is disequilibrium, so this means interest rate will adjust to bring equilibrium in the goods market. Okay. Then we have loanable fund market. Okay. और loanable fund में we have demand for loanable fund and supply of loanable fund. Okay. So we have one asset which is loanable fund, and demand for fund will come from investment. So if you want to make investment, then there will be a demand for loanable fund. Okay. और जब सेविंग हो रही है तो दिस मीन दिस इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड. ओके, हम देखें ना when we save, so then we keep our saving in the banks, okay, financial institutions, and then it means there is a supply of loanable fund. And if someone wants to make investment, they will approach to bank to get the loanable fund. So then there will be a demand for loanable fund. So investors, and they are making demand for loanable fund, and households, they are making the supply of loanable fund. The price of loanable fund is real interest rate. Okay, so we are looking to this savings which are by household. They look to this real interest rate, and also investor, they are looking to this real interest rate, which is
the price of loanable fund. So demand for loanable fund comes from investment. Okay, as I discussed, firms borrow to finance spending on plant and equipment, new office buildings, etc. And consumer borrow to buy new houses. So this is the demand for loanable fund, and this depends negatively on real interest rate, which is the cost of borrowing. So it means when real interest rate increases, demand for loanable fund will decrease. This means investment will decrease. Okay. This is so investment curve is also the loanable funds demand curve. Okay. Investment curve is also the demand curve for loanable fund. And the supply of fund is coming from household savings. Okay. So household use their saving to make bank deposits. Okay, we deposit in banks, we purchase bonds and other assets. So then these funds become available to firm, and then firm borrow these funds to finance their investment spending. Government also, contribute to saving. If government collected taxes and all taxes are not used, so then there will be government saving. And then, so this means we have private saving, which is disposable income minus consumption. If you remember, I wrote that disposable income equals consumption plus saving. Okay, so from disposable income, if we minus consumption, then we have saving, because disposable income is used for consumption and saving. So private saving equals disposable income minus consumption, and public saving is excess of taxes or expenditure. So if the taxes, if we minus government expenditure from taxes, we will get government saving or public saving. So if taxes are more than government expenditure, public saving is positive. If taxes are less than government expenditure, then public saving would be negative. So national saving is the sum of private saving and public saving. Okay, this is sum of private saving and public saving. So this is the national saving. Okay. Private saving and public saving. So private saving is this, public saving is this. So we will put here the value of private saving, this here, and then this here. So private saving is y minus t minus c. Public saving is this, okay, t minus c. So what will cancel out? क्या cancel out हो जाएगा? Sir, t ना, ये t जो है, this t. सर इसकी ब्रैकेट हटाकर हम टी को कैंसिल करेंगे, फिर सही है, तो प्लस देखिए टी माइनस टी कैंसिल हो जाएंगी, ना, जो है प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस टी है और ये प्लस का टी है. अब जब Yes, ब्रैकेट sir. हो जाएगा तो सी जो है वो प्लस का हो जाएगा, सी माइनस y माइनस सी माइनस जी. ओके, ये t जो है वो कैंसिल आउट हो गया. दिस इज योर national saving. Okay, so from income, if you minus consumption, if you minus government expenditure, then you have national saving. Now let's see the change in the variable. Okay, so if x is a variable, delta x shows the change in x. Okay, this delta is a Greek uppercase letter, no? delta. So if delta L equals 1, delta K equals 0,
then delta y equals marginal product of labor, because माया प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डेल्टा वाई और डेल्टा एल, जो एम पी एल है ना, एम पी एल इक्वल्स डेल्टा वाई और डेल्टा एल, because Maya product of labor is change in labor or change in capital. Now, or this is also the slope of the total product का, और अगर डेल्टा एल 1 है तो दिस मीन माया प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स डेल्टा वाई। इसी तरह माया प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फिर किसके बराबर होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल किसके बराबर होगा, this will be delta y over delta k. माया प्रोडक्ट ऑफ बता दें, माया प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल दिस, ठीक है, डेल्टा वाई और डेल्टा एल। अगर हम इसको से चेंज लें कि अगर y माइनस टी लिखा हुआ है और अगर इसमें चेंज लें तो दिस विल बी डेल्टा वाई माइनस डेल्टा टी। ओके, तो इसी तरह इफ़ वी वांट टू नो कंजम्पशन इज marginal propensity to consume into disposable income, y minus t. So this means if we are taking change in consumption, so this is change in income minus change in taxes. So how much consumption will change if there is a change in income and change in taxes? We have to take this and then multiply it by marginal propensity to consume, we will get the change in consumption. So then this will multiply with this, okay, this will multiply with this, and this will also multiply with this. That's why we have MPC into delta y minus MPC into delta t. Okay. Now you have to calculate change in saving. आप इसको ज़रा लिख लें ताकि अब आपको जो कैलकुलेशन में आसानी हो, इसको लिख लें। S इक्वल्स वाई माइनस सी माइनस डी, ये लिख लें, ये जो कि नेशनल सेविंग इक्वल्स इनकम माइनस कंजम्पशन माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और अगर हमें चेंज इन सेविंग निकालना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी माइनस डेल्टा जी, ये लिख लिया आपने। अब आप इसको लिख लें। यस सर। अब आप ये भी लिख लें कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और लेबर जो है उसके बराबर होता है डेल्टा वाई और डेल्टा एल। ठीक है, ये भी लिख लिया। अब आप ये भी लिख लें, इसको भी लिख लें। Change in consumption is MPC into डेल्टा वाई माइनस MPC into डेल्टा टी। तो अगर आपको कंजम्पशन का चेंज चाहिए, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ चेंज इन कंजम्पशन, तो इनमें से हम जो आपको वैल्यू देंगे देन यू कैन कैलकुलेट। इसी तरह अगर हम आपसे चेंज इन सेविंग अगर निकालना चाहें तो यूजिंग दिस यू कैन, इफ आई से व्हाट इज़ चेंज इन सेविंग, सो व्हाट विल यू डू, आप जो है डेल्टा वाई ले लेंगे,
ठीक है, माइनस डेल्टा सी माइनस डेल्टा जी। ये लिख लिया आपने, ये लिख लें, इसको लिख लें। लिख लिया सर। सही, अब मैं आपको वैल्यूज दूंगा और फिर आपको पूछा जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यू हैव टू कैलकुलेट चेंज इन सेविंग। अगर एमपीसी जो है 0.8 है, एमपीएल जो है वो 20 है, तो फिर आपको फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यू हैव टू कंप्यूट डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी जो है वो 100 के बराबर है, क्या होगा? एक आंसर कैलकुलेट करके लिख लें अपने पास। पिछले जो रिलेशनशिप हम मैंने आपको बताए थे उन्हीं को यूज़ करें। इसका आंसर आए तो बता दे वो क्या आंसर है। यस, आंसर है किसी का? नोट सर, नोट येट सर। So there is some confusion, sir. क्या कंफ्यूजन है? Sir, how would we calculate change in consumption? ये है ना, हमने आपको चेंज इन कंजम्पशन को कहा भी नहीं, हमने तो अब चेंज इन सेविंग कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। जैसे चेंज इन कंजम्पशन का ये आपने लिखा है ना, ये फार्मूला। Sir, for that, sir, for we have, sir, for changing saving से जो हम उसके लिए पहले हमें चेंजिंग कंजम्पशन उसका जो फार्मूला है ना सर, चेंजिंग सेविंग का, चेंजिंग हाँ इनकम माइनस चेंजिंग कंजम्पशन माइनस चेंजिंग स्पेंडिंग है ना। हाँ। सो हम्म, यही तो सोचना है आपने। यस, सर जी भी यहाँ पे गिवन है ना, वो 100 है और MPL वो 20 है, मार्जिनल की प्रोफिटेबिलिटी गिवन है आपके पास, एमपीसी गिवन है, एमपीएल गिवन है। जी भी गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तो पहले वाला जो सेविंग हमें एस फाइंड करना है उसी का फार्मूला पुट करेंगे। आपको ये फाइंड करना है एस ना, इज इक्वल डेल्टा, डेल्टा एस डेल्टा फाइंड आउट। एस, जी बिल्कुल। 120 में से माइनस कराएंगे 0.8,
तो ये माइनस 19.2 होगा, 119.2, अपना आंसर बता दें, फाइनल आंसर। 119.2। चलें और चलें और किसी का आंसर। Sir, I am facing some difficulties, confusion, so I can't. यही yes, no one is getting the answer. आप इसको यूज करें ना, डेल्टा एस जो है किसके बराबर है, यहाँ से आप देखें। डेल्टा Delta एस y minus delta y डेल्टा minus delta g. डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी माइनस डेल्टा जी। Delta g. Delta g is given, so there is a problem with how would calculate we delta y and delta c. हाँ, इनको देखें। अब कुछ आइडिया आ रहा है? एमपीएल आपको गिवन है, Yes, sir. Of एमपीसी course. गिवन है, Yes, sir. एमपीसी गिवन है ना। Yes, sir. तो सोचें। हमने आपको सिर्फ डेल्टा, यहाँ पे आपको डेल्टा जी के हमने कहा है कि 100 के बराबर है, तो फिर डेल्टा टी किसके बराबर होगा? डेल्टा टी का तो हमने नहीं कहा ना, तो डेल्टा टी तो ज़ीरो होगा ना। गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर को चेंज कर रहा है ना, टैक्सेस को चेंज नहीं कर रहा ना। तो डेल्टा टी आपके पास ज़ीरो आ गया। अब मसला ये है कि डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट होगा। आपके पास एमपीएल गिवन है, एमपीसी गिवन है। अब सोचें। MPL is 20, okay, डेल्टा जी इज 100, MPC is 0.8। इन फिगर्स को यहाँ पे यूज करें।
चलें, आपको ये नहीं आ रहा, नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर डेल्टा टी इनमें से कोई एक भी कर लें तो आपको बाकी समझ में आ जाएगा। डी वाला कर सकते हैं, डी वाला तो आसान है ना। डी वाला तो सबसे आसान है ना, इसका आंसर मुझे बता दें। ये MPL है। डेल्टा एल है, डेल्टा एल। डेल्टा इसका एल आपको गिवन है, आपको 2 होगा ना एमपीएल इसका, गिवन है, एमपीएल गिवन है, 2 ठीक है। होगा इसका सर। हाँ, एमपीसी गिवन है, तो आपको डेल्टा एस निकालना है। क्या आंसर आ रहा है? डेल्टा एस निकालना है ना, 2 कहाँ से आएगा? देखिए, जब मैं आपको डेल्टा एल कह रहा हूँ 10 है, इसका मतलब है डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी क्या होगा बताएं? इसमें तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना हम, ये 0 होगा। डेल्टा टी क्या होगा? फॉर्मूला लगेगा MPL इज इक्वल डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। यस। अब करें कैलकुलेट, इसका तो आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आसान है। डेल्टा वैल्यू एस की वैल्यू क्या आ रही है? MPL की वैल्यू 20, डेल्टा वाई की वैल्यू 100, डेल्टा एल की वैल्यू 10। तो 20 और 10 बचेगा, 20 डेल्टा मल्टीप्लाई 10। नहीं 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 नहीं, इस डेल्टा वाई का 100 अभी ना लें हम, तो मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने जो सर्किल में किए हैं इनको यूज करके डेल्टा एस निकालना है। ये तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ सिर्फ। ये इसको इसका आंसर बताएं कि अगर डेल्टा एल, इफ डेल्टा एल इक्वल्स टू 10, MPC इक्वल्स 0.8, MPL इक्वल्स 20, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, तो फिर डेल्टा एस की क्या वैल्यू होगी? ये मुझे बता दें। अभी भी नहीं हो रहा? और हिंट दे दूं मैं? यस। ये सर हिंट दे दे। यस सर। हाँ, अब अच्छा, यस सर। चलें सर डेल्टा वाई निकाल लें। चलें डेल्टा वाई तो निकाल सकते हैं ना, वो तो सबसे आसान है। डेल्टा एस तो बाद में निकालेंगे, डेल्टा वाई तो निकाल लें। डेल्टा वाई भी नहीं निकाल सकते, ये देखें ना इसको। भाई, इनमें से कोई फार्मूला यूज करके डेल्टा वाई निकाल सकते हैं ना, आपके पास चीजें गिवन है। आपके पास एमपीसी गिवन है, आपके पास एमपीएल गिवन है, आपके पास डेल्टा एल गिवन है, तो आप डेल्टा वाई नहीं निकाल सकते? क्या वैल्यू होगी डेल्टा वाई? सर 200 आ रहा है मेरा। यस, 200। कैसे निकाला बताओ? सर फॉर्मूले को ड्राइव किया। कौन सा आ फार्मूला रहा है। यूज किया? कौन सा फार्मूला यूज किया? सर ये MPL इज टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एल। ये है ना, ये है ना, एमपीएल इक्वल्स डेल्टा वाई और डेल्टा एल। आपको एमपीएल की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको डेल्टा एल की वैल्यू गिवन है, तो आप डेल्टा वाई निकाल सकते हैं ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। यस डेल्टा सर। वाई इक्वल टू एमपीएल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल। तो आपके पास डेल्टा एल जो है वो 10 है,
MPL जो है वो 20 है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा वाई आपके पास हो जाएगा 200। अब डेल्टा वाई आपके पास 200 है, डेल्टा एस क्या होगा फिर? जब डेल्टा जी और डेल्टा टी जो है वो 0 हैं, तब आप रखें यहाँ पे डेल्टा एस कैलकुलेट करें। सर 40 आ रहा है। 40 जी 40 आ रहा है। जी, एस जो आ रहा है सर 40 आ रहा है, क्योंकि सर उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, डेल्टा सी एमपीसी भी हमें दिया हुआ है सर, डेल्टा वाई, अब क्योंकि हमारे पास डेल्टा वाई भी आ गया, डेल्टा टी भी है, अब तो हम ये 40 वाला आएगा जी सर। कैसे? हाँ, आंसर सही है आपका, बताएं आया कैसे, ये बता दें हमें, इनको समझा दें, बताएं। ओके सर, मैं बताती हूँ सर। पहले तो हमने डेल्टा वाई जो निकाला वो 200 हो गया, ठीक है सर। सही है, अब जब डेल्टा 200। वाई, ठीक है सर, जब डेल्टा वाई हमारे पास आ गया तो सर आपने एक फॉर्मूला बता था, डेल्टा सी इज इक्वल टू एम पी सी, डेल्टा वाई वाला ये सर, मैंने रहा, उसमें ये रहा वो। जी 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 सर, जी सर सही। मैंने उसमें वैल्यूज की है सर, तो जब वैल्यूज हम्म, पुट की तो मेरा डेल्टा सी जो आया 160 आया है सर। अच्छा फिर सर मैंने जो हमारा जो वो था ना फॉर्मूला फर्स्ट वाला, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, सर उसमें वैल्यू से पुट की तो सर एस 40 आ रहा है, 40। सही है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना। 200 में से आपने माइनस कर दिया 160 ना, और डेल्टा जी तो वैसे भी 0 है, तो आपको 40 आ गया। सब जी लोगों की सर। समझ में आ गया? ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसका जो है बड़ी मुश्किलों से आपको जो है ना, ये तो हमने कर लिया, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, अब आपके लिए ये असाइनमेंट है। ये इस तरह अभी आपने देखा ना किस तरीके से वो सॉल्व हुआ, ये तीनों जो है ना आप सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि आपने कैसे सॉल्व किया, और इनके आंसर्स आपने निकालने हैं हर एक के लिए, हर एक अलग अलग होगा। अगर डेल्टा जी 100 है, एम पी सी 0.8 है, एम पी एल 20 है, तो डेल्टा एस क्या होगा, उसका आंसर आपने देना है। इसका मतलब है इस केस में आपको बताना है कि डेल्टा एस क्या होगा, इसमें आपको डेल्टा एस बताना है, फिर इसमें बताना है डेल्टा एस क्या होगा, हर केस में। और हर केस को आप इसको इसको इससे लिंक नहीं करेंगे, ये डेल्टा टी की वैल्यू है, एम पी सी एम पी एल लेके ही बताइए। इसी तरह डेल्टा वाई की वैल्यू अगर गिवन है तो फिर डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी वो आप कैलकुलेट करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। सोचिएगा, क्योंकि अभी आपने सोचने में काफ़ी देर लगाया, मैंने जो है सबसे आखिर वाला आपसे सॉल्व कराया, वो भी बहुत मुश्किलों से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आई विल स्टॉप हेयर। यस।